Hey everyone, welcome to our YouTube channel, and this is the daily vocab session. In this session, we discuss 5 words daily, which are important for exams like SSC, CGL, CHSL, CPO, CDS, IBPS, railways, defense exams, and all other different competitive exams. This session is also very helpful for those who want to improve their vocabulary. So, without wasting much time, let's start the session. Our first word is navish. Navish means dishonest. So कोई भी इंसान या कोई भी चीज़ जो बहुत झूठी है, जो धोखेबाजी करती है या धोखेबाज है कोई इंसान, जिस कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता जिसकी बातों में, जिसके लाइक एक्शंस पे, तो उसे हम बोलते हैं navish. Navish simply means dishonest. Similar words are unscrupulous, dishonorable, unprincipled, ignorable, and untrustworthy. So, navish means something or someone who is dishonest. Let's look at the examples. But it's too late now to expose such a navish trick on Saturday before election. So, एक ये इलीगल ट्रिक है या फिर कोई भी डिसऑनेस्ट ट्रिक है जो मे बी इलेक्शंस को अफेक्ट करेगी. सो here navish conveys the meaning of being like a dishonest trick or like untrustworthy or illegal trick. Our next example is because he is a trickster, all of people avoided the navish salesman. So here's a dishonest salesman जिसको सब अवॉइड करते हैं because everybody knows about him कि he is a trickster or he was a trickster. Our next word is laconic. Laconic means using very few words. बहुत कम शब्दों का प्रयोग करके किसी चीज़ को बोला गया हो या समझाया गया हो, एक्सप्लेन किया गया हो, उसे हम बोलेंगे laconic. Using very few words. So similar words are concise, brief, terse and short. So कोई भी बहुत ही concise and brief थिंग है जिसको हमने बहुत कम वर्ड्स में एक्सप्लेन करा है, दैट इज़ नोन एज लैकॉनिक. Let's look at the examples. Our first example is to save valuable time, give me a laconic explanation of what happened. So here laconic conveys the meaning of a brief explanation. Okay. Next example is her laconic response to the question made us believe that she had not listened at all. So here also the laconic conveys the meaning of very use of very few words and very less words. Okay, so laconic simply means the use of very few words. Our next word is knack. Knack means an acquired or natural skill at doing something. इससे पहले एक सेशन में हमने एक वर्ड यूज़ किया था डेक्सटेरिटी, राइट? वो और knack, these words are like synonyms. They conveys almost the same meanings, like an acquired or natural skill at doing something. So dexterity का हमने एक synonym पढ़ा था adroitness. So here also we can use that word. So it conveys the meaning कि कोई natural skill है किसी चीज़ को करने में, एक निपुणता है, एक ability है, capability है. Okay, similar words are dexterity, talent, flair, एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी. ओके, किसी भी चीज़ को करने में जो एक स्किल है किसी के पास, दैट इज़ नोन एज नैक. लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल्स. Although she had never been formally trained, the beautician had a knack for styling hair. So here the knack conveys the meaning of like beautician had a skill or a talent for styling hair. Our next example is a knack for determining a lie from the truth helped the detective excel in his field. So detective के पास एक एबिलिटी थी, एक कैपेबिलिटी थी, एक टैलेंट था कि वो झूठ को पकड़ लेता था. So that helped him in excelling in his field. Our next word is ill-bred. Ill-bred means badly brought up or rude. किसी को बुरी मतलब लाइक अभद्र और असभ्यता से लाइक
बड़ा किया गया हो, या फिर जो इंसान ऐसा हो जिसमें सभ्यता ना हो, बदतमीज़ी करता हो, दैट पर्सन इज़ नोन एज इल ब्रेड, कि बहुत ही बुरी परवरिश से पला हुआ इंसान है. सो सिमिलर वर्ड्स आर अनकॉथ, इल मैनर्ड, रूड, unmannerly, impolite, discourteous, uncivil, or maybe uncivilized. Okay, so here the meaning of ill-bred is असभ्य. कोई भी ऐसा इंसान जो असभ्य है, that person is known as ill-bred. Our examples are: you really are the most ill-bred man to come here at a time like this. So ill-bred means uncivilized, or like uh, badly brought up or uncaught person. Our next example is they were not so ill-bred as I had been led to believe. Here the ill-bred conveys the same meaning कि वो इतने बुरे नहीं थे जितना मतलब मेरे को ऐसा believe करवाया गया था. Our next word is demented. Demented means behaving irrationally due to anger, distress or excitement. कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आप थोड़े से ज़्यादा एक्साइटेड हैं, थोड़ा पागलों की तरह बिहेव कर रहे हैं, किसी भी चीज़ से हो सकता है, वो आपका एंगर हो, डिस्ट्रेस हो, या फिर हो सकता है खुशी भी हो, बट आप थोड़ा ओवर एक्साइटेड हैं एंड लाइक कुछ भी कर रहे हैं वो आप अपने आप को ओवर एक्सप्रेस कर रहे हैं. ठीक है, इसे बोल सकते हैं एक टाइप का मेंटल इलनेस है आपके अंदर कि आप आप नहीं, मतलब जो भी इंसान है वो थोड़ा मेंटली स्टेबल नहीं है एंड हर चीज़ को थोड़ा ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहा है. दैट पर्सन इज़ नोन एज लाइक दैट पर्सन, उसको हम बोलेंगे डिमेंटेड, लाइक ही इज़ डिमेंटेड, वो थोड़ा पागल है या फिर थोड़ा इडियोटिक है. ठीक है, सिमिलर वर्ड्स आर इडियोटिक, मैड, इनसेन और डिरेंज्ड. ओके, सो कोई भी एक ऐसा इंसान जो एक्सप्रेस अपनी फीलिंग्स को कुछ ज़्यादा तरीके से कर रहा है, लाइक जो नेचुरल है उससे कुछ अलग कर रहा है. ओके, let's look at the examples to get the better idea about the word. He called the police on his demented neighbor after she started screaming at the hedges for no reason. So कोई इंसान है जिसने अपने पड़ोसी के लिए पुलिस को बुलाया बिकॉज वो अचानक अपने बहुत तेज तेज चिल्लाने लगी, सो विदाउट एनी रीज़न. सो demented means like being overexcited or like mentally ill. That's why a person is behaving irrationally. Okay, our next example is she was nearly demented with the worry when her son didn't come home. So here also वो चिंता में इस तरह से बिहेव करने लगी कि लाइक वो बिल्कुल ऑलमोस्ट डिमेंटेड थी, ऑलमोस्ट पागलों की तरह बिहेव कर रही थी. ओके, so these are the 5 words that we are going to discuss today. Let's have a quick revision over them before finishing this ending this session. So the first word that we discussed today was knavish. Knavish means dishonest or untrustworthy. Laconic means using very few words. Our next word was knack. Knack means dexterity or adroitness, talent, ability, capability, an acquired or natural skill. Okay. Our next word was ill-bred, which means badly brought up or rude, ill-mannered, uncivilized. And the last word was demented. Demented means like behaving irrationally, idiotic, mad, insane. Okay, so that's it for today, guys. Hope you have liked the session. If you haven't, please like the session and subscribe to the channel for the regular updates. We upload these vocab session daily. So thank you so much. I will see you in the next one.